हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर नंबर 7 है फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? आंसर, फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ ए जॉइंट। द रेंज ऑफ जॉइंट वेरीज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट, depends on the surrounding tendons, ligaments and muscle tissues. Question number 2, what is aging? So aging is a process of continuous and irreversible decline in the efficiency of various physiological functions. Question number 3, what is stroke volume? Stroke volume is a volume which the heart pumps out the blood in a stroke in aorta. Define oxygen intake. It is the amount of oxygen which can be taken by the lungs from the atmosphere. Question number 5, what is cardiac output? The total volume of blood pumped by heart per minute. Cardiac output is equal to heart rate into stroke volume. ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला याद रखिए आप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन फिजिकल फिटनेस। सो फिजिकल फिटनेस इज कंसिडर्ड अ मेजर ऑफ द बॉडीज एबिलिटी टू परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन वर्क एंड लेजर एक्टिविटीज, टू बी हेल्दी, resist hyperkinetic diseases and emergency situations. Question number 7, what is oxygen uptake? The amount of oxygen which can be absorbed and consumed by the working muscles from the blood. Next question, what is question number 8? What do you mean by physiology? Physiology is the division of biology that deals with the functions and activities of living organisms and their parts, as well as the physical and chemical process, that is nutrition, movement, reproduction, which is the living activities. Question number 9, what is cardiovascular system? Answer, it sends oxygen to various muscles, tissues and arteries and at the same time return the deoxygenated blood to the lungs to be reoxygenated and return to fuel to activity tissues of the different parts of the body. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आंसर, इट इज द सिस्टम इन विच ऑर्गन्स टू टेक ऑक्सीजन इनसाइड एंड थ्रो अवे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3, what is respiration? The process of oxygen supplied to the cells and the transport of carbon dioxide from the cells is called respiration. Define blood vessels. Blood vessels are tube-like structures in the body in which blood flows from heart to cell and vice versa. 3 types of blood cells: arteries, veins and capillaries. Next question, question number 13, what do you mean by circulatory system? The body system which specialized function of transporting air, nutrients, waste material, hormones and enzymes. It consists heart, blood vessels and glands. Question number 14, what is trachea? Trachea is a hollow windpipe which permanently kept open and is lined with ciliated epithelium tissues. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम? इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर वेंटिलेटेड विद द वन नॉर्मल इनहेलेशन ड्यूरिंग ऑर्डिनरी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? It is the volume of air that can be expelled by the most forcefully expiration after the deepest inspiration.
Question number 7. What VO2 maximum oxygen uptake? Answer. It is the maximum amount of oxygen utilized by the body in 1 minute. Question number 18. Explain aerobic activities. It means perform activity with maximum use of oxygen to produce energy for that activity. Question number 19. Define total lung volume. It is the volume of air which the lungs can accommodate after a deep inspiration. What is myoglobin? The myoglobin is a type protein that present in muscle fiber to store oxygen which produces energy in emergencies. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. आई होप आप इसको देख के अपने नोट्स को अपडेट कर लोगे और रिवीजन भी यहीं से कर लेना. विशिंग यू गुड लक.